So, as usual, let's see our bike start. Ooh, so damn cool. Okay, so it's 6:12 and the reporting time is 6:15. I don't think I will reach there. Actually, the meeting point is at Vaji, so it's like 5 to 10 minutes for me, but still, I won't reach there by 6:15. Let's hit the OD to 0. Sorry, the trip matters to 0. So, how many first timers? Okay, so most of you know how to ride. You ride single formation, there's the lead, there's the lead, there's the tail, shepherd रहेगा. There's people who will be going to base. वो लोग तुम्हारे आवाज़ को इतना आगे पीछे करते रहेंगे. ये मत लोगों मारा है मैं सिंगल फॉर्मेशन करता हूँ. वैसे हम सिंगल लाइन में चलो. हाईवे पे भी अपना एक सिंगल लेन में चल रहा हूँ मैं बाइक से हूँ तो एक से बेस्ट में हवा पड़ूंगा तो प्लेटफॉर्म रोड साथ में चलो nobody stops in between for you है everybody is doing it don't stop at future if there is any other reason to flying excuses फिर डिस्कस जाओ तो है पे बताओ तुम्हारा रुकेट है then just then तुम्हारा को behind there never stop without nothing. वो तो काम लगेगा तो यार वो but now चलो थोड़ा you know from the road and pretty straight you go take the highway bike से ride Spiti घाट में आगे पीछे होने वाला है don't worry highway का बहुत comfort zone after the घाट straight Adwait once the घाट है I'll take a word so you will not get ऐसा हो सकता है वो वहाँ के आगे आपके पीछे भी करती थी आप 2 hours you get half an hour start back at 9 please back there
we are all leaving for Dhoom Dam now. So due to the rains, it rained, I won't say heavily, but yes, it did rain. So because of that, many riders did not join us today. So approximately we are like around 27 to 30 riders now instead of the previous count, registered count of 50. It was at this moment he knew. He fucked up. Dirty because of all the mud. But now let's see the view. So we have just arrived at Dhoom Dam. We are entering the premises. Just look at the view. So this is Dhoom Dam, guys. And this is Dominar Hyperride Pune.
तो अभी हम हैं धूम डैम पे। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सबके आगे के टायर में मिट्टी फंस गई थी और उसकी वजह से मड गार्ड्स थोड़े टेढ़े हो गए, कुछ लोगों के मड गार्ड्स टूट भी गए। फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मदद की हमें। वो उसका वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक बात ऐसे हो गई कि एक बंदे का पंक्चर हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गया, तो DIY पंक्चर सेशन भी हो गया यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट की जगह ले ठिकाना, जो हिंजवड़ी में है, वहाँ पे। रोड ध्यान रख, राइट साइड में भाई, थोड़ा ऊपर देख। हाँ, ये भी है क्या? पीछे से तू भी गया क्या? नहीं, ठीक है, मैं चालू है। बाकी गरीब लोगों ने फोन नहीं निकलने का। काय करते हो मग काय। ये बंदे का बाइक है, ये हाँ, ये बंदे का मडगाड़ आ करके बैठा है। बाइक क्यों डालो मेरे चालवा गाडी चालवत नाही, मी ओढतो तिला मागे. फळी माझी हे नाव लिहून ठेवतो. ऑर्डर आहे ओह, एक नंबर हो गया। एक ही बारी में था। मिल गया पक्का वही है ना? हाँ भाई, और वही कहीं भी है। जबरदस्ती छेद करेंगे और मैं वही बोला, मिल रहा नहीं दिखा, मैं दिखा था खपाक गए थे किधर। हो फिर भी रहो आया। तुम यहाँ हो जरा घूमते। अब सब DIY हो रहा है, बराबर डाल के अंदर बाहर करो ना थोड़ा। समझ ले। अरे हम लोग तुम उधर ही एक साल हो गया ना, एक साल एनिवर्सरी डायरेक्ट हो टाक, त्याशिवाय जाणारच नाही, माहिती आहे का? हा, जाऊ दे. जाने में 1.5 घंटा लगेगा। तू बघू एक भाई. So my action camera ran out of battery, so now I have to vlog on mobile. So just completed 224.8 kilometers today,